Am I audible and visible to all of you? Good morning, everyone. Let me share the link. Wait, please wait. A very good morning, everyone. Am I audible and visible to each one of you? Welcome back, everyone. Guys, a very good morning. चलिए करें शुरुआत जल्दी से। देखो आज हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, हमारी आज की क्लास का टारगेट क्या रहने वाला है वो जरा सुन लो, क्योंकि एक आइडिया होना चाहिए कि हम अपने जो नेक्स्ट 1 आवर है उसको कहाँ स्पेंड करने वाले हैं। राइट, सो जस्ट टेल मी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैं सभी स्टूडेंट्स को ऑडिबल एंड विजिबल हूँ क्लियरली। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन। हाय सान्या, हाय सबरजीत, हेलो गौरव। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू सो मच। जल्दी से सब ज्वाइन करो यार, बिकॉज आज मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 2 सेशंस रखेंगे। A very good morning, Karthik. Karthik, thank you so much for your message, your feedback that you gave. It matters to me a lot. चलिए, दैट्स वंडरफुल। गाइज, हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में फ्री कंसेंट का जो टॉपिक है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। हमने उसके प्रैक्टिस करने शुरू कर दिए थे उसके क्वेश्चंस, लेकिन क्योंकि हमारे पास 1 घंटे का ही समय होता है तो हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। अभी रिमेनिंग हम लोगों के पास 20-25 सेशंस अभी हैं, 20-25 अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चंस अभी भी बचे हुए हैं फ्री कंसेंट के। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन एक चैप्टर है जो कि सीएमए के स्टूडेंट्स के पास तो लिमिटेड है, मगर सीए के स्टूडेंट्स के पास भर भर कर है। राइट, और सीएस के स्टूडेंट्स के पास भी काफी क्वांटिटी में है। सो इसीलिए हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू कर देंगे इमीडिएटली आफ्टर दिस। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आज आप लोगों का सेकेंड सेशन लूंगी, मगर वो सेकेंड सेशन के क्या टाइमिंग्स होंगे वो मैं आप लोगों के साथ ही डिस्कस करके ड्यूरिंग द एंड ऑफ द क्लास, जब हमारी क्लास एंड होने लगेगी, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फिर हम उसे भी कंडक्ट करवाकर जल्दी से जल्दी अपने एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। देखो आईसीए जब तक खत्म नहीं होगा, हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर, पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर हम लोग नहीं जा पाएंगे। एंड एज यू ऑल नो, आईसीए इज अ ह्यूज चैप्टर। मैं रोज के अगर 4-5 घंटे लगाना शुरू कर दूंगी तो बाकी के सब्जेक्ट्स जो है वो आपके इग्नोर हो जाएंगे, एंड दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। क्योंकि आपको पास होने के लिए चारों के चारों सब्जेक्ट्स जो है ना, उसमें क्लैरिटी होनी, उनके सब्जेक्ट्स पूरे होने, उनकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज वाई 1 hour a day आई थिंक इज सफिशियंट फॉर ऑल ऑफ यू। हाय सुहाना। चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। लेट्स हैव अ लुक। हाय विदिशा, हाय सुहाना। चलो नेक्स्ट करते हैं, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, देखो मैं एक अगेन एक रिमाइंडर आप सबको देना चाहती हूँ कि ये जो हमारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं ना, ये आपको तभी समझ में आएंगे जब आप लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हो, यानी कि आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, आप फ्री कंसेंट का आप वीडियोस देख चुके हैं, चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसकी एक बारी रिवीजन कर चुके हैं, और अब आप लोग आए हैं फाइनली मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। So for the CMA students, it is very important. These sessions are very important. मगर CA के और CS के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी important है। रीजन इज कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, ये क्लैरिटी लेकर आते हैं आपके
थॉट प्रोसेस में, और फिर जब आप लोग सब्जेक्टिवली अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने करेक्ट आंसर्स को आप प्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61, फ्री कंसेंट ही चल रहा है अभी हमारा चैप्टर। एन अग्रीमेंट विच इज मेड विद फ्री कंसेंट टू विच द कंसिडरेशन इज लॉफुल बट इनएडिक्वेट। वो आप लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या होगा? देखो, पूरी तरीके से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसका रीजन है, क्या रीजन है? लॉ मेकर्स ने बोला है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। If there is no consideration, there cannot be the enforcement of the promise, correct? But the point is, lawmakers are saying that we do not need sufficient consideration. That means if a party who is getting less consideration as compared to the promise what he or she has delivered, that kind of a consideration is absolutely valid if that consideration has been provided with the free consent of that aggrieved or that particular party which has got a less consideration. So an agreement which is made with free consent to which the consideration is lawful but inadequate, वो आप लोगों का क्या बन जाता है? Valid contract. Next is question number 62. Which of the following statement is false? Now we are having four options with us. Out of these four options, there are three correct statements. We need to choose them. No, we are supposed to choose the false statement. A contract is not voidable if fraud or misrepresentation does not induce the other party to enter into the contract. This is true. फ्रॉड में जब तक फ्रॉड ना हो, वाकई में, सी इफ अ सेलर इज इंटेंडिंग टू डू अ फ्रॉड विद अ बायर बट बायर के साथ फ्रॉड हुआ ही नहीं, या बायर उस फ्रॉड से इन्फ्लुएंस हुआ ही नहीं, then we cannot say that while the formation of the contract the fraud has been used. We cannot say this, and if we cannot say this, then definitely the contract is valid. Contract is not voidable. This is the correct statement. Next is question number B. A party cannot complain of fraudulent silence or misrepresentation if he had the means of discovering the truth with ordinary means. Tell me, if you are already having the means to figure out, if you already have the means to figure out the means, right, of discovering the truth, that kind of a representation cannot be considered as a fraud. So this is also true. Next is question number C. In case of fraud or misrepresentation, aggrieved party can either cancel or affirm the contract. This is also a true statement. Voidable contract means a contract that can become void or that can become valid. That has to be decided by the aggrieved party. Next is question number D, option number D. A party who affirms the contract can also change his option afterwards if he so decides. Really? Is it really possible? See, making of the contract is not a kind of a joke which you can, change, or which you can just leave as it is. Once the contract has been formed, it has to be fulfilled, correct? So in the case of the voidable contract also, if the aggrieved party has chooses an option, then you cannot go back to the previous situation, or you cannot choose the other option now one and again, because once the contract has been formed, now you have to fulfill it. आप उसको वापस से change नहीं कर सकते. So this is the false statement. So for the question number 62, the correct option is D. Next is question number 63. Which one of the following is a requirement of or for the misrepresentation to exist? मतलब अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आपके हम बोलते हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन है, राइट? तो वो मिसरिप्रेजेंटेशन किस किस वजह से होगा? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स और व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द मिसरिप्रेजेंटेशन? Misrepresentation should relate to the material fact. The person making a misrepresentation should believe it to be true. No. Option number 2 तो बिल्कुल भी नहीं है, because the person who is making the misrepresentation, that is the innocent misrepresentation, does not believe it to be true. Does not believe it to be true or true? Tell me. Okay, let's see. Option number 1 is correct. Option number 2 is correct. Option number 3, it must be made with the intention to deceive the other party. No, this is fraud. 4, the person making a misrepresentation should not believe it to be true. This is also false. So the correct option is A. 64. Which one of the following agreements are void agreements? Agreements which are made under the unilateral mistake of fact.
They are not void. They are valid. Agreements which are made under the bilateral mistake of facts, yes. Option number 2 can be there. Agreements the consideration of which is unlawful. Such kind of the agreements are also void agreement. So for question number 64, tell me, for question number 64, see, contingent contract cannot be declared as a void agreement. Contingent agreement or a contingent contract does not have any, say, I would say, any kind of a validity until and unless that particular thing happen or does not happen. So for question number 64, it has to be 2 and 3, that is 6B. Sanya, yes. बाकी के स्टूडेंट्स क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? एवरीवन, गौरव, कार्तिक, विदिशा, सान्या, सुहाना, सबरजीत, निकिता. गुड मॉर्निंग निकिता. Now, question number 65. Which one of the following agreement is void? Agreement made under the unilateral mistake of fact. Whenever the examiner is asking the question, you are not supposed to jump to the exceptions. You have to first follow the rules of the journal, journal rules. Like journal rule is no consideration, no contract. Exception is there, no consideration, still you can form some of the contracts. Journal rule is unilateral mistake is no mistake at all. Correct? Unilateral mistake is no mistake at all, but exception is still there. Now, 65. Agreement made under the unilateral mistake of fact. It is not a void agreement. Agreements made under the bilateral mistake of the facts. Yes. This is the kind of a agreement which we say is a void agreement. Next is 66. A person who has been induced to enter. Let me take this question to the next page. Question number 66. A person who has been induced to enter into a contract by misrepresentation has the following remedies. He can affirm the contract and insist on the misrepresentation being made good if possible. He can cancel the contract. He can rely upon the misrepresentation as a defense to an action on the contract, or all of the above. Question number 66. Tell me. लाइट में लाइट मत स्विच ऑफ. Tell me. Question number 66. A person who has been induced to enter into a contract by misrepresentation has the following remedies. They can affirm the contract and insist upon the performance. ये भी correct है. वो cancel भी कर सकता है contract. ये भी correct है. वो rely कर सकता है upon the misrepresentation as a defense to an action on the contract. What does this line means? This line means that in any case, the aggrieved party wants to take an action under that particular contract, they can take it. So this is also completely valid. The correct option for 66 is D, all of the above. Next is 67. A person to whom the money has been paid. The person to whom the money has been paid or anything is delivered by mistake becomes the owner of such money or those goods, must repay the money or return the goods, is allowed to sell the goods and retain the money realized from such goods, has no obligation to return the money. He may do so only as a good gesture. Tell me. Question number 67. A person to whom the money has been paid or anything is delivered by mistake is supposed to repay the money. He should or she should repay the money and return those goods. 68. Difference between fraud and misrepresentations are the following. Misrepresentation is innocent, whereas fraud is deliberate or willful. In misrepresentation, the person making the suggestion believes it to be true, while in case of fraud, he does not believe it to be true. In misrepresentation, there can be no suit for damages, whereas in fraud, there can be a suit for damages. Correct? Now, option number D, all of the above. For question number 68, the correct option is all of the above. Next, 69.
Misrepresentation means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it. गाइज ऑप्शंस को, जो भी ऑप्शंस आप लोगों के पास आते हैं, प्लीज डोंट जंप टू द आंसर, रीड ऑल द ऑप्शंस क्लियरली विद पेशेंस एंड देन ओनली यू आर सपोज टू चूज एनी वन ऑफ देम. Question number 69. Misrepresentation means and includes the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true. Any breach of duty which without an intention to deceive gains an advantage to the person committing it or anyone claiming under him by misleading another to prejudice to prejudice to his prejudice or to the prejudice of any other person claiming under him, causing, however innocently, a party to an agreement to make a mistake to the substance of the things which is subject to the agreement. The correct option for this question is option number D, all of the above. Bilkul correct. Next is question number 70. आइए, the person, question 70, silent is fraudulent in the following cases. Silent is fraudulent in the following cases. If the circumstances of the case are such that regard being had to them, it is the duty of the person keeping the silence to speak. Where the circumstances are such that the silence is in itself equivalent to speech, both A and B, none of the above. Correct. बताइए correct option क्या होगा for question number 70? Which one is the correct option? Both A and B. 71. A person who is 71 पर आइए जल्दी से. A person who is mentally drained due to some mental strain or other persona experience and suffers from the intermittent intervals of sanity. Tell me, such kind of a person is an idiot person, such kind of a person is a lunatic person, intoxicated person, or all of the above. Question number 71. जल्दी से बताइए. Question number 71. A person who is mentally drained due to some mental strain or the other persona experience, personal. This is actually personal experience and suffers from the intermittent intervals of sanity and insanity. Tell me, question number 71. Such kind of a person cannot be considered as an idiot person. No. गौरव, idiot वो होता है जो कि by birth he is the person who is from the very initial years of his life, he is of a person of an unsound mind, right? 71B, correct. The correct option for question number 71 is B. 72. Mr. X purchased a used computer from Mr. Y, thinking it as a computer imported from England. देखो अभी यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है किस लेवल का, वो देखो यहाँ पे मिस्टर एक्स है द बायर एंड ही परचेज्ड अ सेकेंड हैंड कंप्यूटर फ्रॉम मिस्टर वाई द सेलर, थिंकिंग इट एज अ कंप्यूटर इंपोर्टेड फ्रॉम द इंग्लैंड. Mr. Y failed to disclose the fact to Mr. X. On knowing the fact, Mr. X wants to repudiate the contract. Which one of the following statement is correct? Now tell me, which one of the following statement is correct? As per question number 72, Mr. X can cancel the contract on the ground of fraud. Mr. X can repudiate the contract on the ground of misrepresentation. He cannot repudiate the contract. Mr. X can repudiate the contract on the ground of mistake. See, Mr. X purchased a computer from Mr. Y, thinking it to be a computer which is imported from the England. First of all, Mr. X is supposed to share his thoughts with Mr. Y. It is the duty of the buyer to be aware. Let the buyer beware. There is a concept called let the buyer beware, right?
And I don't think so that it was something very much required to be disclosed by Mr. Y. So tell me, is it a kind of a misrepresentation? Really? See, silence does not amount to fraud. Our seller is not duty bound to disclose each and every fact which may or may not influence the decision of the buyer. It is the duty of the buyer, as per the Sales of Goods Act 1930, to be aware of the facts and right, and to be aware there is a doctrine of caveat emptor. He is supposed to be aware about it. So it is under no obligation of Mr. Y to disclose this fact to Mr. X. Hence, the contract is not voidable. The contract cannot be cancelled. Such kind of a contract cannot be repudiated. Option number C. 73. Mr. X contracts with Mr. Y to buy a necklace. Mr. X, let me take this question to the next page. Mr. X contracts with Mr. Y to buy a necklace, believing it made up of pearls, whereas in fact it is made of imitation pearls of no value. ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने आप लोगों को क्लासेस में दिया था ना, कि एक आर्टिफिशियल हार परचेज कर लिया गया था, एज्यूमिंग इट टू बी ऑफ गोल्ड, जबकि सेलर ने अपनी तरफ से ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है कि ये गोल्ड का हार है। स्टिल यहाँ पर आपके बायर को ही कंफ्यूजन हुआ और उसको क्या लगा कि मे बी दिस इज द रियल गोल्ड, जबकि वो एक आर्टिफिशियल पीस था। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है पर्ल्स का। दोबारा से रीड करते हैं। मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद मिस्टर वाई टू बाय अ नेकलेस बिलीविंग इट इज मेड अप ऑफ pearls, whereas in fact it is made of imitation pearls of no value, artificial है। Mr. Y knew that Mr. X is mistaken and takes no step to correct the error. Now, Mr. X wants to cancel the contract on the basis of the fraud. Which of the following statement is correct? See, there is a difference between misrepresentation and a mistake. Misrepresentation में ना आपको कोई misrepresentation, अगर मैं willful बोलूं, willful misrepresentation, इन द केस ऑफ द विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन आपको कोई स्टेटमेंट पास की जाती है जो कि आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे। आपके सामने सेलर जो होगा वो कोई ना कोई एक ऐसी स्टेटमेंट पास करेगा, कुछ ना कुछ ऐसा आपको बोलेगा जिसमें उसकी इंटेंशन होगी कि वो आपके साथ फ्रॉड करना चाहता है। यहाँ पर वाई ने अपनी तरफ से बोला नहीं है 1% भी कि ये गोल्ड की ज्वेलरी है या फिर ये रियल ज्वेलरी है, ये रियल पर्ल्स है। ऐसा कोई भी डिस्क्लोजर आपके सेलर ने अपनी तरफ से नहीं किया। Now comes a fact of mistake. What do you mean by mistake? Mistake के केस में there is no wrong representation. Mistake में कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को representations नहीं देता है, कोई statements pass on नहीं करता है। Mistake के केस में the party is having the erroneous belief. आपको खुद को ये ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो आप लोगों का क्या है, एक रियल ज्वेलरी है। यहाँ पर वाई ने अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया। He does not take any kind of a step to disclose whether it is a gold or the imitation। मगर उसने अपनी तरफ से गोल्ड ज्वेलरी है या रियल पर्ल्स की ज्वेलरी है ऐसा भी कुछ डिस्क्लोजर नहीं किया। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिलेटरल मिस्टेक। क्लियर कट ये किस चीज का एग्जाम्पल है बताइए जरा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिलेटरल मिस्टेक। So, Mr. X can cancel the contract alleging the fraud. Mr. Y cannot cancel the contract. Mr. X cannot cancel the contract. Tell me. Mr. X can cancel the contract alleging undue influence. Mr. X can claim the damages. Tell me, which one is the correct option? Mr. X cannot cancel the contract. Next is question number. Next आइए. Question number 74. Next is question number 74. Mr. X and Y both believe that a particular kind of rice is being sold in the market at 10,000 per quintal, and X sells the rice of that kind to Y at 10,000 per quintal. But in fact, the market price was 12,000. So now tell me. Clearly, it is a matter of a bilateral mistake. And in the case of the bilateral mistake, the contract is void
ab initio. Will not say void ab initio, will say it as a discovered to be void. That means it is a void agreement simply. The contract is what? It is not illegal, it is not voidable, it is not valid. The agreement, it should not be the contract is void. It should be like it is the agreement is void. Right. 75. D believes blue color to be the black color for any reason whatsoever. खुद एग्जामिनर भी बोल रहा है हमें नहीं पता ऐसा वो क्यों सोच रहा है बट वो ऐसा कुछ सोच रहा है डी जो है वो ब्लू को एक ब्लैक कलर मानकर चल रहा है फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर ही हैज अ गारमेंट शॉप ही सेल्स वन ब्लू कलर शर्ट टू एम representing it to be a black color. M knows nothing about the colors. आपके पास एक पार्टी ऐसी है जो कि कलर ब्लाइंड है उसको पता ही नहीं है कि कलर्स कौन से होते हैं वो ब्लू को ब्लैक और ब्लैक को ब्लू मान रहे हैं और एक पार्टी हमारे पास है मिस्टर एम जिनको कलर्स का कोई आइडिया ही नहीं है क्लूलेस ही इज टोटली क्लूलेस नाउ रीड इट अगेन मिस्टर डी believes blue color to be the black color for any reason whatsoever. He has a garment shop. He sells one blue color shirt to M, representing it to be the black color. Now, M knows nothing about colors. N believes D and accepts the blue color to be of black color. Later on, M's mother explains M that the color of the shirt is actually blue and it is not black. Now, tell me, it is the clear case of fraud. It is a clear case of cheating, misrepresentation, unintentional fraud. See, it is a clear case of innocent misrepresentation because there is no fraud. In the case of the fraud, the person who is making the misrepresentation does not believe it to be true. In this case, Mr. D, who is selling the shirt, believing it to be of black color, he believes it to be of black color though it is of a blue color shirt, right? So it is the innocent misrepresentation. Next, 76. A tells his wife that he would commit suicide if she did not transfer his personal assets to him. She does so under his threat. Now, this is the clear case of Chikkam Amiraju versus Sheshamma. याद है हमारे पास एक ये केस लॉ आया था जिसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को इन्फ्लुएंस करके इमोशनली ब्लैकमेल करके प्रॉपर्टी अपने नाम और अपने ब्रदर के नाम करवाई थी एंड लेटर ऑन उस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया वॉइडेबल डिक्लेयर किया गया ये बोल के दैट थ्रेट टू सुसाइड देखो सुसाइड अगर आपने कर लिया तो बात खत्म हो गई कमिट अगर आपने अटेम्प्ट किया है सुसाइड दैट इज द ऑफेंस अंडर द इंडियन पेनल कोड लेकिन आपने ना तो सुसाइड किया ना ही अटेम्प्ट किया यू हैव ओनली एंड ओनली थ्रेटन द अदर पर्सन कि प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो अदरवाइज मैं सुसाइड कर लूंगा तो ये अपने आप में इस केस की वजह से ही इसको एक कोवर्शन की कैटेगरी में डाल दिया गया है एज पर सेक्शन नंबर 15 सो वाइफ कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट wife cannot avoid the contract the husband can enforce the contract both B and C tell me which one is the correct option here the wife can avoid the contract because threat to commit suicide is also a kind of coercion clear hai 77 A sold some land to B at the time of sale both the parties believed it to be in good faith that the area of the land sold was 10 hectares. A sold some land to B at the time of the sale. Both the parties believed it to be in good faith that the area of the land sold was of 10 hectares. Now, it however turned out that the area was 7 hectares only. How is the contract of the sale is affected? Tell me. The agreement is illegal, the agreement is impossible, or the agreement is void, or all of the above. First of all, the purpose or the object of formation of the contract is not unlawful. So we clearly cannot declare it as an illegal agreement, right? It is totally possible. So we cannot declare it as an impossible also. So the best option which we get here for question number 77 is the option number A. The agreement is void agreement, right? Because it is a example, it is a clear-cut example of bilateral mistake. Next, question number 78. H contracted with NIC Corporation for the erection of the number of houses. In calculating the prices of the houses, H by mistake deducted a particular sum twice. Now,
The corporation affixed its seal to the contract which correctly represented its intention. Now tell me, it is an example of unilateral mistake. Somehow it is an example of unilateral mistake. Tell me, or a bilateral mistake. H contracted with a company, right, for building or for creating the number of the houses. Now, in calculating the price of the houses, H by mistake deducted a particular sum twice. Like अगर उनको 10,000 लेना था, instead of 10,000, he charged 20,000 by mistake. It was something unintentional. Now, the corporation affixed its seal to the contract which correctly represented its intention. अब मुझे बताइए, is it the case of the fraud? Is it the case of the fraud or what? यहाँ पे H ने रिप्रेजेंट कर दिया 20,000 अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि अमाउंट कितना है 10,000, और ये सब कुछ उन्होंने किया है बाय मिस्टेक. By mistake, but still whatever he has done, it is a kind of a misrepresentation, innocent one. Now tell me, the contract is now binding. The contract can be avoided by H. There is no contract at all since there is no consensus ad idem. The contract is not binding. Tell me, what is the correct option? What is the correct option? Tell me, guys. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला मैम 78 का आंसर होगा ए. मतलब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो वही बात होगी कि कल को अगर आपने कोई एक अग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, मैंने अपनी कोई प्रॉपर्टी है, मेरे लैपटॉप का जो वैल्यू है मान लो 15,000 रुपीज का है, मेरे लैपटॉप का वैल्यू इज ऑफ 15,000 रुपीज, और ये बात मुझे नहीं पता, मुझे मेरे एजेंट्स के थ्रू पता लगा. अभी मुझे मेरे एजेंट ने मुझे कुछ वो बोल रहा था 15,000 मुझे फोन पर उसे 50,000 सुनाई दिया. अब मैं जब इस लैपटॉप को किसी बायर को सेल कर रही हूँ तो मैं उनसे चार्ज कर रही हूँ हाउ मच, 50,000 रुपीज. अब देखो यहाँ पर आई एम अंडर अ मिस्टेक कि ये 15,000 का नहीं है, ये 50,000 का है, क्योंकि मुझे सुनने में गलती हुई, मैंने गलत चीज को बिलीव किया. इट इज माई मिस्टेक, इट इज अ यूनिलेटरल मिस्टेक, इट इज अ मिस्टेक बाय मी, राइट. बट मैंने अपनी उस मिस्टेक का ही इस्तेमाल करके बायर से 50,000 रुपीज उस लैपटॉप के चार्ज कर लिए, और गलती से बायर ने वो साइन भी कर दिया कॉन्ट्रैक्ट. अब आप मुझे बताइए, आज नहीं तो कल जब भी ये पता लगेगा, is that contract is going to be binding on both the parties? It is the clear cut example of misrepresentation. And how, let me tell you how it is the example of misrepresentation. Let me tell you, open your books, guys. You must have read this chapter called one second, free consent. In this chapter called free consent, when we are talking about misrepresentation, now you can see on the screen, in the case of the misrepresentation, misrepresentation will be considered as the misrepresentation causing, however innocently, a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is the subject matter of the agreement. Now tell me, it is the mistake by one party. It is the mistake by the one party, but it is causing the other party also to make. There is a misrepresentation by one party, there is a misrepresentation by one person, and there is a mistake by the other person. Now read the question. Now read the question. H made misrepresentation and this company has committed a mistake. There is a misrepresentation also, there is a mistake also. H contracted with Nick Corporation for the erection of number of houses. In calculating the prices of the house, H by mistake deducted a particular sum twice. H ने तो mistake करी, नंबर जो भी अमाउंट था वो ट्वाइस टाइम जो है उसने चार्ज कर लिया, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसके ऊपर जो भी लिखा गया था दैट वाज रिटन बाय एच, करेक्ट. कॉर्पोरेशन से भी गलती हो गई, द कॉर्पोरेशन अफिक्स्ड इट्स सील टू द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब वो जो कंपनी थी, वो जो कॉर्पोरेशन थी, उसने भी साइन कर लिया, विच करेक्टली रिप्रेजेंटेड
its intention. Now tell me, the contract is now binding. The contract can be avoided by H. There is no contract at all. Since there is no consensus ad idem, the contract is not binding. Tell me. First of all, here H cannot avoid the contract. Here H is not going to avoid the contract. The party who is paying the extra sum of money can avoid the contract. Here, if the option would have been given, NIC company can NIC company or NIC corporation can avoid the contract, then yes, it cannot. मगर वो ऑप्शन हमें दिया ही नहीं हुआ. तो पॉइंट नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है. इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंडिंग. इट क्लियरली मीन्स कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ये? इट इज अ काइंड ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग नहीं होता, उसे बाइंडिंग बनाना पड़ता है. कौन बनाएगा? अग्रीव्ड पार्टी. यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी कौन है? हमारी एनआईसी कॉर्पोरेशन. एच से भी गलती हुई है, मगर एच से जो गलती हुई है हम उसे बोलेंगे इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन. हम क्यों बोलेंगे उसे इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन? बिकॉज एच ने गलती से कुछ लिख दिया और वो भी ये मान के चल रहा है कि वो सच है. उससे पहले एरनेस बिलीफ हुआ, फिर उसने प्रेजेंट भी कर दिया और वो प्रेजेंटेशन करते समय कॉर्पोरेशन से भी गलती हो गई, उन्होंने चेक नहीं किया और उसको यूनिलेटरल मिस्टेक उनसे भी कंडक्ट हो गया. So the contract is clearly not binding. Both the parties, out of both the parties, one of the parties, that is the NIC corporation, can make it void or can make it able. Now they need to decide. The contract is not binding. अगर आपसे कोई पूछे क्या मैम voidable contract जो होता है वो binding होता है? The answer is no. Voidable contract तब तक binding नहीं होगा जब तक ये ना decide कर लिया जाए कि उसे valid बनाना है. और वो डिसाइड कौन करता है? अग्रीव्ड पार्टी. कौन अग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? वो पार्टी जिसका कंसेंट जो है वो फ्री नहीं था. उसका कंसेंट जो है या तो वायलेट, उसका कंसेंट जो है या तो फ्रॉड से, कोअर्जन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से या मिसरिप्रेजेंटेशन से आया है. एम आई क्लियर एवरीवन? 78 ऑप्शन डी. अभी सबको समझ आया? क्योंकि सबने एकदम, एक ने 78 ए क्या लिखा, सबने 78 ए लिखना शुरू कर दिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन गाइज, एंड यू कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली विद द थॉरो रीडिंग. अक्सर ऐसा बोला जाता है स्टूडेंट्स को, क्लियरली अक्सर ऐसा बोला जाता है कि यार तुम्हारा अगर एमसीक्यू बेस्ड है ना, तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तू तो बस एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ले, हो जाएगा. यार ये चीज ना, ये वाला जो फंडा है ना, ये मैथ्स के केस में चल सकता है कि चलो तुमने क्वेश्चंस को, क्योंकि वहां पर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हो तो आप बट नेचुरली क्वेश्चन को सॉल्व भी करोगे और सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली ऑप्शन मिल जाएगा. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स, specifically like law, which you are reading for the very first time, ये चैप्टर, ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट ही आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, उसको भी अगर आप लोग ऐसे टाइम पास करके पढ़ोगे ना कि नहीं यार एमसीक्यू ही तो है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं चलो, हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा. यू नीड टू रीड इट, यू नीड टू हैव द कॉन्सेप्ट. कल मुझे एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि मैम मेरे बीकॉम के एग्जाम्स थे और मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गया था, बट मैंने आपकी क्लासेस अटेंड करी थी तो मैं सिर्फ उन क्लासेस के बेसिस पे अपना पेपर अटेम्प्ट कर कर आया एंड मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ. जब ये मैसेज मुझे आता है ना, ऐसे मैसेजेस आते हैं ना, दीज काइंड ऑफ मैसेजेस मोटिवेट्स मी. क्योंकि वो अटेम्प्ट ही क्यों कर पाया? क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे. कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे, चाहे से आप बीकॉम का पेपर दें, चाहे से आप सीएमए का दें, सीए करें या सीएस करें, यू कैन अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी गाइस, कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली क्लासेस से तो आएंगी, मगर इन कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करने के लिए कि वो दिमाग में आपके पास बैठे रहें, उसके लिए जरूरी है कि आप रिविजन करें. वो रिवीजन एक तो आप मेरे साथ करते ही थे. हमेशा हम लोग जब भी अपनी क्लासेस की शुरुआत करते थे तो हम लोगों ने जो पिछला पढ़ लिया उसको भी रिवाइज करते थे. वो मैं क्यों करवाती थी? दिस इज दी ओनली रीजन. मगर ये रिवीजन आप लोगों के एंड से भी इम्पोर्टेंट है. तो आई डोंट नो अभी कार्तिक इज अटेंडिंग द सेशन और नॉट. कार्तिक का मुझे मैसेज आया था कि मैम मेरा एग्जाम बहुत अच्छा रहा. उसका मैसेज पढ़ के मेरा दिन भी बहुत अच्छा हो गया कि यस, मेरे एफर्ट्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन. सो अभी आइए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 79. जल्दी से देखिए एवरीवन. इन द केस ऑफ
Question number 79. A fraudulently informs B that A's estates is free from the encumbrances. B thereupon buys the state. The state is subject to mortgage. Now, A fraudulently informs B that A's estate is free from encumbrances. See, देखो, whenever you are buying or selling the property, those properties are supposed to be free from any kind of the charges or any kind of the encumbrances. Now, A has a property जिसको उसने ऑलरेडी मॉर्टगेज किया हुआ है और मॉर्टगेज करके गिरवी रख के क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है। मॉर्टगेज वर्ड जो है वो हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आई एम श्योर आप सबको पता है। तो ए के पास एक प्रॉपर्टी है जिसको उसने ऑलरेडी मॉर्टगेज किया हुआ है। अब देखो, जब आप मॉर्टगेज करते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी को, तो आप ऐसे घर, मान लो घर को आपने मॉर्टगेज किया है, तो आप ऐसे घर को उठाकर दे नहीं देंगे किसी को, आप सिर्फ घर के पेपर्स देंगे। करेक्ट, घर अभी भी आपके पास ही है, यू आर स्टेइंग इन दैट होम, यू आर स्टेइंग इन दैट हाउस एंड यू आर एंजॉइंग द, यू नो, द, से आई वुड से द प्रॉपर्टी। अभी मिस्टर ए ने क्या किया, जानते हुए कि भाई ये मेरा मॉर्टगेज है ऑलरेडी प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को बी को सेल कर दिया, दोबारा से फेक पेपर्स बनवा लिए एंड देन द प्रॉपर्टी हैज बीन सोल्ड टू बी। तो क्लियरली मेंशन्ड है, ए fraudulently informs B that A's estate is free from encumbrances. Now B thereupon buys the state. The state is subject to mortgage. Now tell me what is to be done. Now B may avoid the contract, B may insist upon its performance, B may get the mortgage debt redeemed, all of the above. Tell me, what can be done? What is the correct option? B may avoid the. See, clearly with B, there is a case of the fraud. B here is an aggrieved party, and being an aggrieved party, B has got the complete right to avoid the contract. So, what is the? B may avoid the contract, B may insist upon its performance, B may get the mortgage debt redeemed, or all of the above. Tell me, यहाँ पे shall नहीं लिखा है, B shall avoid the contract, B shall insist upon its performance, B shall get the mortgage debt redeemed, or all of the above. What can be done? ए ऑप्शन भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, यानी कि 79 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट हैज टू बी डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। अब वो चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं, वो चाहे तो इंसिस्ट भी कर सकते हैं, और वो चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि चलो यार मॉर्गेज का अमाउंट पे कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ पेइंग मनी टू ए हम क्यों ना मॉर्गेज का अमाउंट जो है वो ही पे कर देते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी। A had offered B a price of rupees 10,000 for B's flat. ध्यान से सुनिएगा। A had offered B a price of rupees 10 lakhs for B's flat, but B was not ready to sell the flat at all. A had made an offer to B to buy his flat at the rate of rupees 10 lakhs, but B is not at all ready to sell the flat at all. A says to B that I shall kill you if you don't agree to sell me your house for rupees 10 lakhs. Then B thereafter did all that was desired of the X. In order to save his life, what is the immediate answer? Clearly, it is the case of the coercion. Clearly, it is the case of the coercion. So A can enforce the contract, B can enforce the contract, A has applied coercion, the contract is unenforceable. In चारों में से which one is the correct option? Tell me. चलिए आप करेक्ट ऑप्शन इसमें मेंशन करिए गाइस, एंड जस्ट गिव मी 2-3 minutes, I'll be back. I'll be back in 2-3 minutes.
वेलकम बैक एवरीवन। हाँ जी, अब बताएं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 81। ए हैड टू ऑफर बी अ प्राइस। प्लीज हैव अ लुक। A had an offer. A had an off. A had offered B a price of rupees 10 lakhs for B's flat. B was not ready to sell the flat at all. A says to B that I shall kill you if you don't agree to sell my house, to sell me your house for rupees 10 lakhs. Now B thereafter did all that towards the desire of the A in order to save his life. I think ये question repeat नहीं हो रहा है. Don't you guys think? Now, A has applied coercion. A has done fraud with B. A is guilty of misbehaving with B. A has an anti-social nature. Tell me. A has applied coercion. A has done fraud with B. Clearly, यहाँ पे question is similar, but the options are different. But still, we have to choose the same answer that A has applied coercion in question number 81. Next is question number 82. A Hindu widow borrowed money from a lender for the purpose of filing a suit for maintenance. A Hindu widow borrowed money from a lender for the purpose of filing a suit for maintenance. The lender advanced money at 100% rate of interest. This is the clear-cut example of what? This is the clear-cut example of, tell me. The act of money is induced by coercion, undue influence, fraud, or misrepresentation. Tell me. In the case of the undue influence, one of the party is the dominant party and one of the party is the weaker party. So here clearly a Hindu widow who borrowed the money from a lender is actually a weaker party, and the lender who is giving the loan is using that circumstances, using that particular, those circumstances in which the lender will be getting the higher rate of interest, that is 100% rate of the interest. So it is the clear cut example of undue influence. Next is 83. Sanju took a medical insurance from Deadly Disease Insurance and Claim Corporation of Asia through one of its agents, Manju. There are two parties, Sanju and Manju. Sanju took a medical insurance from a Deadly Disease Insurance and Claim Corporation of the India, right? Through one of its agent, Manju. Now, Sanju signed whatever documents were placed before her by the Manju in good faith. Here are the two parties. Again, Sanju and Manju. One of the party is the agent of this particular insurance company. Right? Manju is the agent and Sanju is the customer who is buying the medical insurance. Now here, Sanju signed whatever documents were placed before her by the Manju in good faith. The documents contained the fact that Sanju was healthy. See, जब भी आप insurance contracts बनाते हैं, the party who is taking the insurance is supposed to disclose all the material facts regarding all the important facts regarding the health. So the document contained the fact that the Sanju was healthy, fit and fine, whereas she was actually suffering from chronic asthma and acute allergy. Now, संजू ने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू तो यही मेंशन किया है कि मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, आप मेरा इंश्योरेंस करवा लो। देखो, इंश्योरेंस कंपनीज भी चाहती है कि उनको ना जो जिसको भी अपने इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं, दैट पर्सन शुड डिस्क्लोज ईच एंड एवरी फैक्ट अबाउट द हेल्थ. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द गिव द क्लियर पिक्चर ऑफ इट. जैसे हम इंश्योरेंस कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी पॉलिसीज के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करे, इन द सेम वे इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंश्योरेंस होल्डर ऑल्सो टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स. संजू जो कि ऑलरेडी एक डिजीज से सफर कर रही है, दैट इज क्रॉनिक अस्थमा एंड एक्यूट एलर्जी, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उसने मेंशन तो किया नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं मिसप्रेजेंटेशन करी है. अब नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि वो आपकी विलफुल है या फिर इनोसेंट. देखते हैं. संजू did not take the care to suggest the changes in the documents and the policy was issued based on the above submission. Now, Sanju is well protected because she relied on Manju in all the good faith. Sanju is well protected because Manju never specifically asked her about the
above issues and she remained silent. Sanju has a duty to speak and disclose the above issue. Sanju has no duty to speak and disclose the above issue. It is the duty of the company and its representative to ask whatever is required. See, in the case of the insurance contracts, specifically, silence do amounts to fraud. Remember, I have told you all because these are the contracts where it is the duty of the person to speak and disclose about the issues, whatever the issues you are having. Am I clear? Guys, now listen to me very clearly. First of all, मैं इस लेक्चर का जो नाम मैंने अभी लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किया हुआ है मैं इसको चेंज करके फ्री कंसेंट ही कर दूंगी पार्ट 2 बिकॉज इट इज अ फ्री कंसेंट चैप्टर ओनली विच वी हैव डिस्कस्ड सो फार. नाउ आई वांट टू टेक अनदर सेशन. अभी इस सेशन को हम लोग एंड कर देंगे. आई नो इट हैज नॉट बीन it is going to be around 1 hour now. So we are going to conduct another session today only for the legality of object and consideration and the agreements which are opposed to public policy. This is the chapter which is given in detail in the CA curriculum, in the CS curriculum, and for the CMA students also, some of the part has been covered into it. So I suggest all the students, whether you are doing CMA, whether you are doing CA or CS, to attend this session also. But अभी ये सेशन कब होगा वो मैं आप लोगों के साथ मिलकर डिसाइड करना चाहती हूँ. सी राइट नाउ व्हाट इज द टाइम? 12 बज रहा है. राइट नाउ टेल मी सुहाना, जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, मैंने साइलेंस एज टू फ्रॉड आपको जब पढ़ाया था, देन आई टोल्ड यू अबाउट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. वो भी एक बार देखना. राइट नाउ इट्स 12 o'clock. टेल मी कब करना चाहते हैं आप लोग सेशन? कैन वी अगेन मीट अराउंड 1 p.m. after an hour? Tell me 1 p.m. or 1:30? Tell me Nikita, Gaurav, Sabarjeet, Suhana, Yashashvi, Kunal, Sanya. Tell me Anisha. 7 p.m. ठीक रहेगा मैम. 7 p.m. 7 p.m. 7 p.m. Okay. 7 p.m. ठीक नहीं रहेगा. We can have it around 1 घंटे बाद. क्या प्रॉब्लम है? क्या हम लोग 1 घंटे बाद नहीं कर सकते? ओके मैम, इवनिंग नहीं हो पाएगा. चलो ठीक है. निकिता, लिसन टू मी गाइस, लिसन टू मी वेरी क्लियरली. लिसन लिसन लिसन. राइट नाउ इट्स अराउंड 12 p.m. राइट? What if we all meet around 1:30 today? Like you have 1.5 hours with you. Just get up, freshen up, have something, start studying something, and then we can meet around 1:30. Okay, 1:30, 2 p.m., 2 p.m. or maybe 2:30. Guys, I need answers from everyone. 2 p.m. हमारा ठीक है? 2 p.m. में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू गाइज हैव 2 hours, कंप्लीट 2 hours विद यू. आप बड़े आराम से कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, लॉ भी उठा सकते हैं और एनी अदर सब्जेक्ट भी. आपके पास लाइक हाफ एन आवर मानो अभी भी आपका चला गया बिकॉज खाना खाने में एंड वट एवर यू एक्स्ट्रा यू वांट टू डू. आपके पास 1.5 आवर्स होगा. उस 1.5 आवर्स में यू कैन पिक कॉस्टिंग और मे बी मैथ्स एंड देन यू कैन डू समथिंग प्रैक्टिकल एंड देन अगेन यू कैन ज्वाइन मी अराउंड 2 p.m. ठीक है. चलो ग्रेट गाइस, आज ही मिलेंगे अराउंड 2 p.m. Have a wonderful, wonderful time. See you all in the next 2 hours. Goodbye.